So we now move from diligently practiced gravity-defying moves on the ground to exciting gravity-defying maneuvers in the air. And if you've loved every minute of what you've witnessed so far, then do ask for more. फ्लाइट पास का कंट्रोल अभी आपने देखा। कर्नल पीपी विश्वास के नेतृत्व में 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट जो भारतीय वायुसेना के अद्भुत और अद्वितीय फ्लाई पास्ट के कंट्रोल के लिए संचार प्रदान कर रही है। So everybody, eyes skywards as we watch the first formation from the fly past, the Trishul. 3 ALH helicopters in Vic formation. For the first time, a tri-services formation is taking part in the Republic Day. Flying at a speed of 180 kilometers per hour, led by Group Captain Abhishek Shukla, Commanding Officer 116 Helicopter Unit. The captain of the helicopter, the captain, is Lieutenant Colonel Atul Srivastav. The Navy helicopter was flown by Commander Ajay Yadav, and the indigenously produced in India. और त्रिशूल के बाद आकाश में 3 चिनूक हेलीकॉप्टर्स विक फॉर्मेशन में। पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर्स गणतंत्र दिवस परेड में। ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ रावत की कमान में, उनके साथ बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर राहुल शर्मा और विंग कमांडर प्रशांत उनियाल। 180 किलोमीटर की रफ्तार और 100 मीटर की ऊंचाई पर। The excitement building up in the crowd as the fly past is well on its way. The next formation will be comprising 5 state-of-the-art precision attack Apache helicopters. They have provided the Indian Armed Forces a significant edge against the enemy in the battlefield. The formation will be led by Group Captain Mannat Shailu, Commanding Officer 125 Helicopter Squadron. The captains of the other 4 helicopters are Group Captain Ashok Kumar, Wing Commander Kshitij Awasthi, Wing Commander Indumeet Singh, and Wing Commander Praveen Sarathi. Versatile helicopter capable of firing air-to-air and air-to-ground missiles. अपाचे हेलीकॉप्टर्स जिन्हें हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है, और अब डॉनियर फॉर्मेशन विंग कमांडर एस.के. चौहान के नेतृत्व में 3 डॉनियर विमान विग फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे। ये मालवाहक जहाज हैं और अन्य 2 विमानों में होंगे स्क्वाड्रन लीडर विकास कुमार और स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक वशिष्ठ। सबकी निगाहें एक बार फिर राष्ट्रपति भवन की ओर आकाश में। Excitement galore at the Republic Day parade right now. There is speed, there is pulse racing daring, and there is precision, all thanks to these daredevil men in blue. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be an extension of them as they take wing and vanish into the blue. Behind the Dornier, we will soon see the Hercules formation comprising 3 C-130J Super Hercules aircraft in Vic formation. Inducted into the Indian Air Force in 2011, the Super Hercules is a very versatile tactical transport aircraft optimized for special operations. It has gained fame for its high altitude operations. Led by Group Captain V.P. Singh, the formation will be flying 300 meters above ground at a speed of 350 kilometers per hour. The other 2 aircraft will be captained by Wing Commander Shishir Sukant and Wing Commander H.P.S. Bharti. बेहद रोमांच यहाँ दर्शकों में अपने स्थान पर खड़े होकर इस फ्लाई पास्ट का आनंद लेते हुए।
और हरक्यूलिस के बाद नेत्र फॉर्मेशन। हरक्यूलिस फॉर्मेशन अभी आपने देखी थी, और अब नेत्र यानी आकाश में नेत्र। ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने स्वदेश में ही निर्मित किया है। ये रेडार सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी से ही शत्रु के विमान का पता लगाकर उसे नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ सुखोई 30 MKI विमान उड़ते हुए। AEW&C विमान ग्रुप कैप्टन प्रदीप बत्रा उड़ा रहे हैं, और सुखोई 30 MKI विमानों में विंग कमांडर GBS चौहान और विंग कमांडर उत्कर्ष सिंह। A lovely clear day for a perfect fly past. And now we look skywards for the globe formation, comprising 3 C-17 Globemaster flying in displaced trail wing formation at a speed of 500 kilometers per hour. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic aircraft inducted into the Indian Air Force in 2014. The induction of the C-17 aircraft has changed the dynamics of strategic mobility and reach of the Indian Air Force. Be it humanitarian operations or rapid mobilization for civil aid, the C-17 aircraft has always been there at the forefront. The C-17 aircrafts being captained by Group Captain P. Sisodia, Group Captain Rakesh Sharma and Wing Commander Karan Kapoor. ये सभी विमान देश के अलग अलग शहरों, वायुसेना के अलग अलग एयरबेसेस से उड़कर यहां पहुंचे हैं। कमाल का कोऑर्डिनेशन। और अब 5 जैगवार विमान तीर की शक्ल में यानी एरोहेड फॉर्मेशन में यहां से गुजरेंगे ग्रुप कैप्टन पारिजात सौरभ की कमान में। अन्य विमानों में होंगे विंग कमांडर अर्जारिया, विंग कमांडर गौतम, स्क्वाड्रन लीडर गिल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट चंदेल। इन जैगवार विमानों की रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटे की। Over the years, the fly past has grown to become one of the major highlights of the parade. A wondrous high to conclude a spectacular show of military strength and cultural diversity. And now we look forward to the fulcrum arrowhead formation following the Jaguars 5 MiG-29 upgrade air superiority fighters in arrowhead formation. Aircraft will be flying in formation have been recently upgraded. Led by Group Captain Alok Sharma. The other members of the formation, Wing Commander Parijat Jha, Wing Commander A.B. Vasane, Wing Commander Amol Kelkar and Squadron Leader Arun Balasubramaniam. रफ्तार बढ़ती हुई हुआ, और अब 3 सुखोई 30 MKI त्रिशूल फॉर्मेशन में सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। आकाश में त्रिशूल कैसे बनता है, ये अब हम इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन निशित ओहरी ने। बाकी 2 विमानों में विंग कमांडर नीलेश दीक्षित और विंग कमांडर करण डोगरा। Absolutely spectacular. And now peeling off in 3 different directions. The Trishul formation in the sky. And now a befitting salute to the motto of the Indian Air Force, Nabhasparsham Deeptam, the brilliance that rose to the sky. We will see a lone Sukhoi 30 at a speed of 900 kilometers per hour that will split the sky with a vertical Charlie. In this aerobatic maneuver, the aircraft does a high-speed run at a low level and then pulls up into a vertical climb and then performs quick rolls to one side.
Dhuri along with Flight Lieutenant S. Mishra. ये हैरत अंगेज कर देने वाले दृश्य हैं। Breath holding, breath stopping, breath giving. And so, after enthralling everyone here, as these magnificent men and their flying machines head towards their landing base, our hearts also land back to ground earth. What a splendid display it's been today. From the solar power of a soldier to the combined and many times over multiple power of man machine, inspirational, rewarding, and definitely applaudatory.